So, a very warm good evening to one and all. Welcome back to the today's session to everyone. We welcome you, sir. We welcome you all the participants today's session. So, today we have our guest speaker, Dr. Rajendra DEORE, sir. So, sir is assistant professor from the Department of Practice of Medicine. So, we welcome you, sir. So, today's topic will be regarding nephrolithiasis through the lens of the homeopathy. So I hope this will be a great session to you all, the participants. So over to you, Ashika. Yes, Ashika, you are audible. Yeah. So welcome you all once again in the Homeovision web series organized by All India Homeopathic Student and Youth Association. So today we have with us guest speaker Dr. Rajendra DEORE sir. He is assistant professor in the Department of Practice of Medicine from K.B.Abad Homeopathic Medical College, Chandwad, Maharashtra. And he has done his BHMS and his MD from K.B.Abad Homeopathic Medical College, Chandwad. He has pursued his MD in Practice of Medicine and he has received academic award at AIHSAYA at Kolkata, and he has also published an article in National General Publication, a case of allergic dermatitis with hypothyroidism and evidence-based case report. Also, he has three paper publications, and he is assistant professor too. So today we will be seeing the topic. We will be listening to the insights on the topic nephrolithiasis through the lens of homeopathy. Over to you, sir. Yes, thank you, Dr. Ashika. Before beginning the session, good evening, everyone. I would like to extend my heartfelt thanks to All India Homeopathic Student and Youth Association AIHSAYA for inviting me as a part of a wonderful initiative that is Homeovision 2050 webinar series. So I would like to thanks to each and everyone, those who are put the efforts for that sessions. Okay, can I start the session? Yes, sir. Absolutely, sir. So the today's topic, that is nephrolithiasis through the lens of homeopathy. So nephrolithiasis is very common topic to all. Each and everyone found that patient in clinic. There is a various patients, those who are complaining of recurrence calculi, the colic, is unbearable pain. How to combat this condition with homeopathy? So we can move towards. So yes, nephrolithiasis, that is in detail we see that metabolic causes are there: hypercalcemia, Addison's disease, infectious causes, recurrent UTI, or various multiple causes. There is a vitamin deficiency, vitamin A deficiency, hypoparathyroidism. In that condition, we found that nephrolithiasis is very common. These are the causes, common causes. Then we see that types of calculi. There is a various types of calculi: calcium phosphate, calcium oxalate constituents. These are the common. More than 80% of the renal calculi. Okay, uric acid stones, cystine stone with mixed stones. These are the various types of calculi. Next. Okay, symptomatology. There is a most ever symptom, that is renal colic. How to combat this condition with homeopathy? The hematuria, fever. If there is a UTI, there is a fever, nausea and vomiting. These are the common causes for nephrolithiasis. And other urinary symptoms like urge to urinate, urinary incontinence. These are the common symptoms of the nephrolithiasis. Now, diagnosis. First important thing, how to diagnose. Based on clinical feature and investigation, we can find out the diagnosis of the nephrolithiasis. Now, investigation, that is major part. Radiological, X-ray, KUB. Calcium stones are easily detected as they are radio opaque stones. Most important, that is ultrasonography. The size and site of calculi are easily detected in the daily routine and microscopic examination.
intravenous pyelogram, and spiral CT scan. These are the advanced investigation, but most of the diagnosis made on the ultrasonography and based on the clinical features and signs and symptoms. Okay. Now homeopathic treatment plan. सबसे मेजर चीज आता है कि हाउ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट टेक्स प्लेस इन नेफ्रोलिथियासिस. सबसे पहले जब अपने पास पेशेंट आएगा, सो यू शुड हैव टू द पेन रिलीफ. जब पेशेंट आता है क्लिनिक में, वी हैव टू गिव द मेडिसिन फॉर द पेन. This first is aspect, that is pain relief. Second is how to remove the stone, removal of the stones, and to stop the recurrence. So major problem is that to stop the recurrence. How to stop the recurrence? How we plan for such a disease? So there is a to stop the recurrence. Now, as a homeopathic physician, we should learn about the diet and regimen, role of diet and regimen in homeopathy. So basically, in nephrolithiasis, such a advice to the patient: avoid the food containing oxalate, phosphate, mainly spinach, amarnath, tomatoes, cucumber, guava, cashew nuts, black grapes, cauliflower, and gingerly seeds. Water intake should be adequate. So less water intake that result in nephrolithiasis. Don't hold the urine for long period. Avoid pumpkin, brinjal, fish, meat, mushroom, as they have high purine content. The high purine content food जिसमें रहेगा, उसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स भी होते हैं. तो पेशेंट को हम क्या एडवाइस कर सकते हैं? देयर इज अ ड्रिंक कोकोनट वाटर, पाइनएप्पल जूस और लेमन जूस, as they break down the fibrin and prevent the stone formation. Eat bananas, carrots, and karela. These diet and regimen should be considered for while treating the nephrolithiasis. मेजर एस्पेक्ट नेफ्रोलिथियासिस ट्रीट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग के बारे में भी अपने को सोचना पड़ता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग हम कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं. तो मेजर मेरे प्रैक्टिस में मैंने 5 ही ड्रग को ज्यादा एक्सप्लोर किया है, बाकी ड्रग्स भी है, बट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग कैन बी कंसिडर व्हाइल ट्रीटिंग द nephrolithiasis. First is the lycopodium, second calcarea carb, Fuja occidentalis, Naxomica, and Merksol. These are the commonest constitutional drugs while treating the nephrolithiasis. Now, constitutional remedies like lycopodium. The classic lycopodium physics is medium tall and skinny. They may be stoop shoulder. Face tends to be angular. Brow is typically wrinkled as a result of chronic anxiety. जैसे हम लाइकोपोडियम को जानते हैं कि हार्ड इंटीरियर, सॉफ्ट सुपीरियर, इंटेलेक्चुअली बहुत कीन रहता है बट फिजिकली इज वीक. A lot many lycopodium may get bald at early age. So premature graying of hair, premature balding of the hair, these seen in the lycopodium. Although constitutionally they are thin, many in their adult life becomes obese due to sweets or alcohol. In cases, hips and legs are characteristically thin in comparison to enlarged abdomen. उसका enlarged abdomen but thin legs. So मैंने बोला है कि लाइकोपोडियम आपको पहचानना है क्लिनिक में, तो लाइकोपोडियम को बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रहा है, उसी के साथ एब्डोमेन बड़ा बट लेग्स आर थिन. लाइकोपोडियम हाईली इंटेलिजेंट एंड फिजिकली वीक. Intense craving for sweets, as it is antisoric, this is having craving for sweets. Also you can find out in modern generation they are consuming cheese. चीज के डिजायर भी लाइकोपोडियम में अपने को दिखते हैं. देन लाइकोपोडियम को कंफर्मेटरी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो यू कैन से दैट यू हैव एनी फ्लैटुलेंस गैसेस, so patient can yes or no, so you can also prescribe the lycopodium. Abdominal bloating and weakness of digestion. Digestive issues more found in the lycopodium while treating the patient. Constitutional drug दे रहे हो तो think about the lycopodium. Second, calcarea carbonica. Also, it is an antisoric medicine. Body is fleshy with tendency to obesity. A soft layer of fat is present even non-obese calcareas. Skin is pale. Body is fleshy with tendency to obesity. Soft layer of fat present in non-obese calcareas. Skin is pale, milky in appearance. Complexion is chalky. Face usually rounded and soft in appearance. Limbs and digits of calcarea tends to be shorter, fatter than the average, milky in the appearance. Complexion is chalky. Okay. Then Nux vomica. Major constitutional drug is Nux vomica.
नक्सोमिका आपको जैसे पता है कि नक्सोमिका इज लिविंग हाई लिविंग लाइफस्टाइल, there is consuming alcohol, tobacco and excess of tea and spicy food. जो भी मॉडर्न डेज में नक्सोमिका जो रहेगा आप क्लिनिक में आएगा, so you can also recognize नक्सोमिका through those lifestyle habits. The face is generally little longer than the wide. The feature are sharp, particularly at the nose, which tends to be end in point. Facial features are angular rather than the rounded. Okay, and sharp intellect. Naxomika, it is a fastidious remedy. He is having the all the quality perfection चाहिए नक्सोमिका को. नक्सोमिका में बहुत ardent character का रहता है. So Nux physics tends to be trim and wire or muscular. Many Nux people are taller than the average. Hair is straight and generally dark or reddish through the any shades and occur. So Naxomika, आप most of the student know that नक्सोमिका बैड इफेक्ट ऑफ एलोपैथिक हीरोइक मेडिसिन के लिए दिया जाता है, बट ऐसा ही जरूरी नहीं कि वो वही कारण से आएगा. नक्सोमिका का आप जब इंटेलेक्चुअल देखोगे, परफेक्शन चाहिए उसको, क्वालिटी. नक्स द प्रिफर द क्वालिटी. व्हेन यू आर सी द केंट रेपर्टरी, इन दैट नक्सोमिका is only two remedies for the fastidiousness. One is arsenic album, second is नक्सोमिका. बट नक्सोमिका का जो fastidiousness रहेगा, that is for the perfection, quality. Nux wants the quality and then arsenic wants the cleanliness. That is the main difference in Nux-omica and arsenic. Nux individual, जब भी आपको नक्स प्रिस्क्राइब करना है, जरूरी नहीं कि बैड इफेक्ट ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशंस के लिए ही देना है, बट इन नैश मेट्रेमेडिका देयर इज आल्सो मेंशन दैट कि नक्स देते वक्त ये सोचना कि बैड इफेक्ट ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशंस की वजह से उसका डाइजेशन में प्रॉब्लम हुआ है, जीआई अपसेट हुआ है, then think of the Nux-omica. That is the confirmatory to the Nux-omica individuals. Then Thuja occidentalis. The Thuja is a great antipsychotic medicine. You know that Thuja generally has dark complexion. They have dark hair. They usually have freckles, moles on the skins. Face usually angular than the rounded. Men have average physique. Women usually high light builds. थुजा's eye express the innocence. ऐसा लगता है थुजा में बहुत innocence भरा है पड़ा है. He is having fixed ideas, fixity and is a great antipsychotic medicine. So आप antipsychotic angle से भी थुजा का एक सोच सकते हैं. And थुजा especially we are generally prescribed for the wards. But while consideration, think of the थुजा. थुजा का physics कैसे रहेगा, थुजा के eyes कैसे. You can also any wards also you can think of the antipsychotic medicine, especially thuja. Then mercuries. Majority of mercuries individuals are male. This is again male remedy. Being highly mental type, face is angular, usually youthful in appearance. Eyebrows tends to be strong and straight. The hairs of your mercuries are dark, straight, but can be of any color. Tends to be thin. Most mercury people are thin in the build initially, but becomes fat through the overindulgence. Mercury is also remedy prescribing for syphilitic affection. Recurrent stone हो रहा है, family में tendency and आपको अगर syphilitic miasm strongly दिख रहा है, तो you can also think of the mercuries. Only we are seeing that कि सर ने बोला है कि कैल्केरिया ही देना है, लाइकोपोडियम ही देना है, नक्सोमिका ही देना है, मर्क्यूरीज देना है, थुजा देना है. अगर बाकी भी मेडिसिन हो सकते हैं, बट इट इज दीज आर द कॉमन रेमेडीज prescribed as a constitutional approach for the nephrolithiasis. Okay. Now remedy selection on the basis of radiological finding, laboratory finding, nature of pain, associated symptom and concomitants. अभी जो we are request to the student, please note down. दैट इज रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग के ऊपर कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लैब फाइंडिंग के ऊपर आपका कौन सा मेडिसिन यूजफुल रहेगा, नेचर ऑफ पेन को कैसे ट्रीट करना है, एसोसिएटेड सिम्टम है और नेफ्रोलिथियासिस हो रहा है तो क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड कॉन्कोमिटेंट्स. ओके. नाउ दोज हु आर ब्रिंगिंग द बोरिक मेट्रामेडिका, प्लीज नोट डाउन. सो बेस्ड ऑन द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, मोस्ट ऑफ द राइट और लेफ्ट यूरिटरी के या रिनल है या ब्लैडर. सो राइट किडनी में स्टोन है तो थिंक ऑफ द ऑसिमम कैन, लिथियम कार्ब एंड लाइकोपोडियम. जैसे भी लाइकोपोडियम इज अ राइट साइडेड रेमेडी, so you can also think of the osimum can and lithium carb. These are the common medicines for right kidney. Now we are seeing that
राइट यूरेटर, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, राइट यूरेटर में स्टोन है तो थिंक ऑफ द सारसापेरिला, कॉस्टिकम एंड कार्डस्मर। तो सारसापेरिला इट इज अ ग्रेट एक्शन ऑन द यूरेटर, यूरेटेरिक स्टोन में बहुत यूजफुल होता है। अलॉन्ग विद दैट कॉस्टिकम, द स्पाजम लाइक पेन। देन कार्डस्मर, इट इज ऑल्सो नोन फॉर द लिवर टॉनिक, इट इज ऑल्सो बेस्ट रेमेडी फॉर राइट यूरेटेरिक स्टोन। देन लेफ्ट किडनी, परेरा ब्रावा, स्टिग्मेटा, नक्सोमिका। अगर किडनी में स्टोन है लेफ्ट साइड में तो थिंक ऑफ द परेरा ब्रावा, स्टिग्मेटा एंड नक्सोमिका, इट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द स्टोन। देन लेफ्ट यूरेटर में स्टोन है तो थिंक ऑफ द टैबैकम, बर्बेरिस वल्गेरिस एंड सीरस बी। यू कैन ऑल्सो रीड द सीरस बी फ्रॉम द बोरिक मेट्रामेडिका। ओके, देन जो भी लेफ्ट यूरेटर में स्टोन है, टैबैकम का जो स्टोन रहेगा तो पेशेंट को आप पूछ सकते हो इज देयर एनी हैबिट्स ऑफ द टोबैको एंड पेशेंट हैविंग द very perspirating. Okay, then based on the bladder calculi, to think of the benzoic acid, calcarea copaiva, cantheris, vesicaria and uaversi. These are the best remedies for the bladder calculi. आप इसको कंफर्मेटरी करने के लिए यूरिन का ओडर कैसा ये भी आप पूछ सकते हो पेशेंट को। कोपाइवा इज बेस्ट रेमेडी फॉर द ब्लैडर कैलकुलाई। ओके, कैंथेरिस, पेशेंट इससे टेल दैट कि बहुत बर्निंग हो रहा है, बहुत ऐसा बर्निंग का उसका कैरेक्टर ऐसा रहेगा ना कि आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। उआवर्सी, पेशेंट टेल्स दैट associated with cystitis and bladder calculi, तो think of the uaversi. Based on the type of calculi, mostly radiopaque stones are calcium stone. याद रखना कोई भी radiopaque stones रहेंगे वो कैल्शियम ओरिजिनेट के रहेंगे। ओके, देन लैबोरेटरी फाइंडिंग के ऊपर से कैसे प्रिस्क्राइब करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट अपने पास आएगा तो सब लैब रिपोर्ट्स लेके आता है, डॉक्टर साहब ये यूरिन रूटीन लाया है मैंने, ये एब्डोमिन यूएसजी किया है, आप बताइए। सो उसके ऊपर से आप कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दीज आर द एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन और क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन फॉर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट है स्टोन में तो थिंक ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, इट इज अ बेस्ट रेमेडी फॉर द फॉस्फेट स्टोन्स। Like presence of phosphate in that solid ago. Solid ago is the one of the best remedy for the treating the hydronephrosis. जब भी आप कोई भी रिपोर्ट देखते हो स्टोन का तो उसमें अपने को देखता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस इज मार्क, तो थिंक ऑफ द सॉलिड एगो एंड इट आल्सो क्योर द हाइड्रोनेफ्रोसिस आल्सो। थिंक ऑफ द आरबीसी, आरबीसी अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो थिंक ऑफ द सारसापेरेला, ऑसिमम सैंक्टम, these are ऑसिमम कैन, these are the remedies for the hematuria. Okay, अगर यूरिन में ऑक्सैलेट्स प्रेजेंट है तो थिंक ऑफ द नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड नाइट्रम फॉस। these are the best remedies for nitric acid covers the all three miasms, sora, psychosis and syphilis. सो नाइट्रिक एसिड का भी यूरिन आप ऑर्डर लोगे उसका तो लाइक इज दैट ऑफेंसिव यूरिन रहेगा। अगर यूरिन में पस सेल्स प्रेजेंट है तो थिंक ऑफ द क्लेमेटिस इरेक्टा, इट इज अ बेस्ट रेमेडी फॉर द पस सेल्स। अगर पस सेल्स यूरिन में से कम हो सकते तो क्लेमेटिस इरेक्टा इज बेस्ट रेमेडी फॉर द यूरिन एग्जामिनेशन। देन सबसे मेजर चीज, पेशेंट अपने पास एक्यूटली आएगा तो कैसे उसको ट्रीट करना है। कि रेनल कोलिक का पेशेंट जब भी अपने पास आता है क्लिनिक में तो बहुत ज्यादा सीवियर अनबियरेबल कोलिक की पेन रहता है, उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। वी आर हैविंग लाइक जब आप डेली प्रैक्टिस में देखोगे अगर आपने एक्यूट पेन ठीक कर दिया ना, अपने पास बहुत पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब एक्यूट में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक्यूट ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है नए बच्चों के लिए, बट एक्यूट भी आप अगर आपका सिमिलिमम एग्जैक्टली राइट है, आपकी रेमेडी चॉइस बहुत अच्छे से, so we can also cure the acute pain also. So emergency cases में renal colic का पेशेंट आता है, नेचर ऑफ पेन आइडेंटिफाई कीजिए कि पेन का कैरेक्टर कैसा है, कौन सा मेडिसिन देना है। मोस्टली राइट साइडेड रेनल कोलिक है तो थिंक ऑफ द लाइकोपोडियम, नक्सोमिका, ऑसिमम, सारसापेरेला। अगर कोलिक की पेन है लेफ्ट साइडेड है, बर्बेरिस वल्गेरिस, इट इज अ बेस्ट रेमेडी। पेशेंट सेइंग दैट डल लैकिंग पेन है, सोरनेस है in back, so think of the barbaris vulgaris. Patients tell that also, डॉक्टर साहब ये जब पेन हो रहा है तो देर इज ऑल्सो नोशिया बिफोर ब्रेकफास्ट। तो लेफ्ट साइडेड पेन है, थिंक ऑफ द कैंथेरिस, टैबैकम, दीज आर द बेस्ट रेमेडीज फॉर द कोलिकी पेन। पेशेंट सेज दैट बर्निंग इन कैरेक्टर, बर्निंग पेन है,
So think of the aconite in acute condition. Aconite is very best remedy. Aconite, arsenic album. आर्सेनिक एल्बम का पेन जो रहेगा ना, पेशेंट सेज दैट कैरिड डिजायर टू द कैरिड फास्ट। जब पेशेंट को जब पेन होता है तो पेन के टाइम पे पेशेंट को स्टोन निकले या ना निकले, बट पेशेंट को जल्दी रिलीफ चाहिए। आप अंदर बिल्डिंग बन गई तभी चलेगा, बट स्टोन जल्दी स्टोन का जो पेन है वो ठीक करो। तो पेशेंट का ये एक्सप्रेशन रहता है, बहुत एंशियस रहेगा और आर्सेनिक पेशेंट वांट्स रिलीफ, एनी हाउ रिलीफ चाहिए। तो arsenic is the best remedy for the burning pain and also relieve the pain. Then camphora. कैम्फोरा में कोलैप्स लाइक कंडीशन रहेगा, पेशेंट का कोलैप्स हो जाएगा पेन की वजह से, इतना बर्निंग रहेगा। थिंक ऑफ द कैंथेरिस, इट इज आल्सो बेस्ट रेमेडी फॉर द बर्निंग पेन। देन द रेमेडी इज टर्बेंथिना। टर्बेंथिना इज आल्सो बेस्ट रेमेडी फॉर द बर्निंग पेन एंड वुआवर्सी। तो ये जो बर्निंग रहेगा ना, तो ये पेशेंट को वुआवर्सी में जब हम देखते हैं कि वुआवर्सी का पेशेंट सिस्टाइटिस के साथ आता है, तो ड्यूरिंग मिक्चुरेशन देयर इज अ लॉट ऑफ बर्निंग प्रेजेंट इन द वुआवर्सी पेशेंट। नाउ मेजरली पेशेंट्स बोलता है कि क्रैम्प आ रहे डॉक्टर, बहुत क्रैम्प है, क्या करना चाहिए? सो क्रैम्प लाइक कंस्ट्रिक्शन पेन रहेगा, सो उसके लिए बेस्ट रेमेडी इज दैट बेलाडोना, बर्बेरिस वल्गैरिस। कैक्टस इज आल्सो प्रिस्क्राइब फॉर द क्रैम्प लाइक कंस्ट्रिक्टिंग पेन। These are the best remedy while dealing with cactus. I read from the cactus, boric metramatica, Clark से पढ़ा, Nash से पढ़ा। तो ये cramp like constricting pain also found in the cactus and it is the best prescribed for the cactus. Polygonum, it is a rare remedy used also in cramp like constricting pain. Third remedy is that कैप्सिकम। पेशेंट बर्निंग, स्मार्टिंग, क्रैम्प्स, बहुत सीवियर में उसको पेन है, सो यू कैन आल्सो प्रिस्क्राइब फॉर द क्रैम्प कंस्ट्रिक्टिंग पेन। देन टेरेबेंथिना। ओके, नाउ पेशेंट सेज दैट न्यूरैल्जिक स्पाज्मोडिक पेन है। न्यूरैल्जिक इज शॉक लाइक पेन है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है। सो थिंक ऑफ द अगेन बेलाडोना, कैंथेरिस, लाइकोपोडियम, परेरा ब्रावा। स्पेशली राइट स्टोन के लिए, राइट किडनी में स्टोन है तो परेरा ब्रावा इज द बेस्ट वन। सो ओवावर्सी, पल्सेटिला। पल्सेटिला का न्यूरैल्जिक स्पाज्मोडिक पेन ऐसा रहता है, आता है जल्दी बट जाता है ग्रेजुअली, तो वो आप सोच सकते हो कि पल्सेटिला कब प्रिस्क्राइब करना है। पल्सेटिला जो पेन में रहेगा ना, उसको निकालना लाइक न्यूरैल्जिक स्पाज्मोडिक पेन है तो आप पल्सेटिला भी सोच सकते हो। स्टैपिस एग्रे इज वन ऑफ द रेमेडी। कोलोसिन, मोस्ट ऑफ द कोलिक जो रहेंगे तो उसमें आपको बेलाडोना, कोलोसिन, ये रेमेडी कॉमनली मिलते हैं। देन मेडिसिन इज अ डायस्कोरिया विलोजा। जब आप डायस्कोरिया विलोजा का बात करते हो कि डायस्कोरिया में पेशेंट विद फीबल डाइजेस्टिव पावर, जब पेशेंट का डाइजेशन इज वीक, स्लो रहेगा डाइजेशन, पेशेंट आपको बोलता है डॉक्टर साहब कुछ भी खाता हो तो डाइजेशन ही नहीं होता है, बहुत वीक डाइजेशन है, डाइजेस्टिव इशू है। एंड आल्सो आप इसको एक क्वेश्चन कर सकते हो कि यू हैव हैबिट्स ऑफ टी ड्रिंकिंग, लाइक पेशेंट 10 से 12 बार दिन में चाय पीता है, तो यू कैन आल्सो फाउंड द डायस्कोरिया विलोजा बेस्ट रेमेडी। बेंडिंग बैकवर्ड से रिलीफ मिलता है पेशेंट को, तो डायस्कोरिया, कोलोसिन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर न्यूरैल्जिक स्पाज्मोडिक पेन। देन नेचर ऑफ पेन में हम देखेंगे रेडिएटिंग टू स्पर्मेटिक कॉर्ड। अगर रेनल नेफ्रोलिथियासिस का पेन स्पर्मेटिक कॉर्ड तक जा रहा है, रेडिएट हो रहा है, तो थिंक ऑफ द क्लेमेटिस इरेक्टा, पल्सेटिला, lithium carb and spongiatosta. These are the best remedies for the radiating pain. Okay, then associated symptom, patient come with certain symptoms, not only renal colic से आएगा, आपके पास renal colic के लिए ही आया है, but patient having another symptom, associated symptoms से patient having cystitis, renal calculi with cystitis, so think of the clematis and copaiba. So I read from the boric metramatica, that is clematis. क्या indications हो सकते हैं clematis के, और आप क्या पूछ सकते हो confirmatory question clematis इरेक्टा। सो क्लेमेटिस इरेक्टा में जब हम यूरिनरी सिम्टम्स देखते हैं तो पेशेंट हैविंग टिंगलिंग इन यूरेथ्रा लास्टिंग सम टाइम्स फॉर आफ्टर यूरिनेटिंग, फ्रीक्वेंट स्कैंटी यूरिनेशन, बर्निंग एट ऑरिफाइस, सिस्टाइटिस में बहुत बर्निंग प्रेजेंट रहेगा, तो थिंक ऑफ द क्लेमेटिस इरेक्टा। देन इंटरप्टेड फ्लो, जो यूरिनेशन का फ्लो रहेगा इंटरप्टेड रहेगा, यूरेथ्रा फील कंस्ट्रिक्टेड, यूरिन इमिटेड ड्रॉप बाय ड्रॉप, इनएबिलिटी टू पास ऑल द यूरिन, पूरा यूरिन पास नहीं कर पाएगा, ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेटिंग,
pain usually worse at night and pain along with the spermatic cord. This is a stricture formation found in the clematis erecta. Second remedy is copaiba. Copaiba is another drug which is a rare drug, but most of the physician also use for the renal calculi. Okay, associated with cystitis and nephrolithiasis के साथ you can also prescribe the copaiba. So patient having hydronephrosis. So Solidago, I usually prescribe hydronephrosis के लिए patient आ रहा है मेरे पास, तो I usually prescribe Solidago 30. Solidago मैं usually prescribe करता हूँ, बहुत अच्छे results है. You can also use the Solidago. मैं आपको Solidago का कुछ confirmatory बातें जो बताता हूँ. यस, सॉलिडेगो हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए बहुत बेस्ट है. तो उसके रीजंस भी देखिए कि सॉलिडेगो का यूरिन स्कैंटी है, रेडिश ब्राउन है, थिक सेडिमेंट है, डिसयूरिया एंड ग्रेवल. यूरिन इज अ डिफिकल्ट एंड स्कैंटी. अल्बुमिन रहेंगी, ब्लड रहेगा, स्लाइम इन यूरिन. पेन इन किडनी एक्सटेंड फॉरवर्ड टू द एब्डोमेन एंड ब्लैडर. सो क्लियर एंड ऑफेंसिव यूरिन समटाइम्स मेक्स द यूज ऑफ कैथेटर अननेसेसरी. ये सॉलिडेगो में दिया है. हम जब होम्योपैथिक कैथेटर का बात करते हो तो सबके दिमाग में आता है सबल सेरुलेटा, बट सॉलिडेगो में भी दिया है कि sometime makes the use of catheter is unnecessary. Thalassi bursa and Solidago replace the use of catheter also. So think of the Solidago. And another remedy that is rarely used, that is Stropanthus. These also remedies used. तो Solidago आप बोरिक पे पढ़ना यूरिन सेक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. और यूजुअली आप Solidago प्रिस्क्राइब कर रहे हो हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए, use the 30 potency. These are the therapeutic prescription while dealing with such patient. Now some patients having the concomitants having no pathophysiological relation, but in our master says that the concomitant symptoms bhi hai patient ko, we have to prescribe such medicine. So nephrolithiasis with cup, the drug is Coccus cacti. Coccus cacti का patient जब आप बोरिक में देखना कि patient having cup and also nephrolithiasis, you can think of the Coccus cacti. The patient having habits of the tobacco, patient consuming tobacco, there is a craving for tobacco, and patient having also developed the nephrolithiasis. So in such, we can also think of the tabacum. Okay, the patient having chapped skin, sarsaparilla. Sarsaparilla is used in also skin cleaning. Yes, तो उसके सारसापारेला के आपने देखे होंगे कि स्किन में बहुत अच्छा एफिनिटी है, बट पेशेंट हैविंग चैप स्किन, तो थिंक ऑफ द सारसापारेला. चैप स्किन के साथ अगर पेशेंट हैविंग along with that patient having only winter में स्किन चैप्ट हो रहा है, तो थिंक ऑफ द पेट्रोलियम. और ऑल सीजन है तो थिंक ऑफ द नाइट्रिक एसिड. चैप स्किन ऑल द सीजन, think of the nitric acid. The patient having liver affection with renal calculi, think of the cardesmer. So cardesmer usually we are thinking that it is a liver tonic, बट कार्डस्मर आप ऐसे भी ये पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब सकते हैं. और इसके लिए आप 30 पोटेंसी इज बेस्ट मेडिसिन फॉर द liver affection. Patient having urticaria with nephrolithiasis. So those patient having urticaria, uric acid diathesis है, confirm the urtica urens. Urtica urine is bestly prescribed for the nephrolithiasis with urticaria. These are the commonest medicines we can think of and prescribe for the patient. ये जितने भी मेडिसिन हम दे रहे हैं, जब सिमिलम मैच होता है तो क्यूर हैपन इन 1 hour also and 1 minute also. So think of the prescription. Okay. Now सबसे मेजर चीज एंड मोस्ट ऑफ द कॉमनेस्ट टॉपिक, दैट इज रिकरेंस ऑफ कैलकुलाई. मोस्ट ऑफ द रिकरेंस हो रहा है कैलकुलाई में. कैलकुलाई फॉर्मेशन रिपीटेडली हो रहा है. मेरे पास एक पेशेंट आया था, ही इज हैविंग 15 स्टोन्स इन द एज ऑफ 27 ईयर्स मेल. अभी तक 15 बार स्टोन हो चुका है, हर बार एक्सपेल होता है. तो हाउ टू ट्रीट द पेशेंट, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम फॉर दैट,
कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब रिपीटेशन हो रहा है स्टोन का, बार बार हो रहा है ऐसा स्टोन, तो पेशेंट को आदत लग गया है, और पेशेंट का वो पेन का थ्रेशोल्ड भी आप देख सकते हो कितने। तो फॉर द रिकरेंस ऑफ कैलकुलाई बिकम्स टेंडेंसी टू मेनी इंडिविजुअल, बहुत सारे लोगों का इंडिविजुअल का टेंडेंसी होता है। सो यू शुड नो दैट रिकरेंस क्यों हो रहा है, व्हाट आर द हैबिट्स, व्हाट आर द डाइट। सो यू कैन थिंक ऑफ दैट कि पेशेंट का डायथेसिस कैसे रहेगा। डायथेसिस आपको कंसिडरेशन में लेना है और कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। बट एज अ मेडिसिन डिपार्टमेंट आई से दैट कि डायग्नोज द केस कि क्यों हो रहा है। तो डायग्नोज मेटाबॉलिक कॉजेस है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है। सो यू कैन थिंक ऑफ दैट कि व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर द रिकरेंस ऑफ कैलकुलाई। फॉर दैट वी आर कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। डायथेसिस ऑफ पेशेंट हैज टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन कि पेशेंट का डायथेसिस है, रूमेटिक, गाउटी, यूरिक एसिड, दिस डायथेसिस व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट, रिकरेंस आप स्टॉप कर सकते हो। So majorly recurrence of calculi, I have choose the formula. Accordingly, 3 remedies I have prescribed for the recurrence of calculi. These are the my formula, but logically. So I have choose 3 medicines. One is the cardamom, second is China, and third is natropause. Usually, cardus is a liver tonic. China has loss of vitality, and natropause it is a usually we are taking for homeopath. We are consider the natropause as a antacid. Okay, so कार्डस जब भी अभी देना रहेगा पेशेंट का, इसका मैंने 3 मंथ्स का फॉर्मूला बनाया है कि कार्डस सुबह दो, चाइना रात में दो, और नाइट्रमफॉस 6x डेली 2 बार देना है। तो ये 3 महीने का अगर पेशेंट कोर्स करता है तो उसके बाद कभी पेशेंट को स्टोन नहीं होगा। दीज आर द माई एक्सपीरियंस फॉर रिकरेंस ऑफ कैलकुलाई। बट इसके अलावा भी आपको कोई सोचना है, कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, तो यू कैन थिंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, डायथिसिस ऑफ द patient, and one of that certain remedies that we are tautopathic medicine. These are the tautopathic बोल सकते हैं आप, calculi renalis. These are the best remedies we can also prescribe for the patient. Calculi renalis along with the constitutional drug, you can also prescribe the calculi renalis. Okay, these are the commonest medicine. सिर्फ आपको याद रखना है रिकरेंस ऑफ कैलकुलाई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग का भी नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल देना है या डायथेसिस के बेस पे देना है। सो यू कैन प्रिस्क्राइब कार्डस, चाइना एंड नेट्रमफॉस 6x. These are the from my clinical experience. You can also use for the patient. Usually आप 3 months तक उसका ट्रायल कर सकते हैं एंड बेस्ट रिजल्ट है। मेरे आई हैव प्रिस्क्राइब 10 और मोर पेशेंट, सो उसके बाद अभी तक पेशेंट को रिकरेंस हुआ नहीं स्टोन का। ओके, नाउ यूज ऑफ नो सोड सबसे बेस्ट वे कि होम्योपैथी में जब हम नोसोड्स का बात करते तो नोसोड आर द पेस मेकर ऑफ मट्रा मेडिका, और नोसोड आर पेस मेकर फॉर होम्योपैथ ऑल्सो। नोसोड्स का जब यूज करोगे तो नोसोड एज अ बेस्ट इंटरकरेंट मेडिसिन फॉर द नेफ्रोलिथियासिस। व्हेन previously well selected remedies not acting, not responding to the patient, think of the nosod are best for the nephrolithiasis as a intercurrent. Nosod also anti-miasmatic remedy. सबको पता है कि tuberculinum we are prescribed as a anti-miasmatic to break the tendency of calculi formation. Effective remedy tuberculinum in higher potency. You can read tuberculinum from Boric Matra Medica, उसके इंट्रोडक्शन में दिया है हाई पोटेंसी में renal disease में tuberculinum is the best one to use for the to treat the nephrolithiasis patient. So think of the nosods. Nosod are the pacemaker. अगर आपको कोई राह नहीं मिल रही कि पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब क्या करना है, तो think of the intercurrent medicines. So nosods you can also prescribe for the nephrolithiasis. Now potency selection, as ये सब क्लिनिकल डिस्कशन है, क्लिनिकल वे पे अपन फोकस कर रहे हैं, तो हायर मेडिसिन बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, नक्सोमिका, लाइकोपोडियम, थूजा, कैलकेरिया कार्प, तो मोर द सिमिलम हायर द पोटेंसी, बट along with that constitutional medicines usually prescribe in higher potency. I also prescribe lycopodium 1m 10m also. Okay, नक्सोमिका 10m तक भी दिया है, but patient having relief. So based on constitutional approach, you can choose the potency 30 and 200, indicated according to the totality and susceptibility of the individual.
30 और 200 मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करना है. यूजुअली दीज आर द थेरेपेटिक मेडिसिन. जैसे मैंने आपको बोला है कोकस कैक्टा है, टर्बेंथिना, नाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सारसापरेला. Okay, these are the therapeutic medications. So usually we prescribe in according to totality and susceptibility. अगर आपको repetitions के वे से जाना है तो think of the 30 potency and 200 potency also. Certain mother tinctures. Mother tinctures are also prescribed for every patient. So based on the organ affection. So remedies like Berberis vulgaris. It is the commonest medicine, also known by the layman also. Layman भी pharmacist के पास जाके ओ stone का दवाई दीजिए. So Berberis vulgaris is commonly prescribed. But remedies like Berberis vulgaris, hydrangea. अगर आप बोरिक मेट्रामेडिका में रीड करोगे, hydrangea is the best medicine for stone breaker. It is a stone breaker remedy. So hydrangea mother tincture, Pereira brava, the right-sided stone है, तो think of the Pereira brava. Osimum can should be given in mother tincture. These are the usually we prescribe mother tincture also. Mother tincture अपने लिए diuretics का काम करते हैं. Patient is not satisfied with single dose. तो patient को as a आपको कुछ देना है supplementary, you can also think of the mother tincture. Mother tinctures are physiological doses. Okay, this is for the potency selection. There are certain mother tinctures for renal calculi. So कौन से mother tincture prescribe किए जाते हैं? So Berberis vulgaris, it is commonest head remedy for the kidney stone, especially left-sided. Most of the author says that it is a left-sided, but in Boger synoptic you see that Berberis is right-sided stone के लिए भी prescribe किया गया है. So whether it is left or right, you can also think of Berberis vulgaris. Berberis vulgaris act as a diuretic for homeopathy. So second mother tincture is a hydrangea. Hydrangea remedy for gravel and breaking the stone, enabling their easy passage. आपको prevent the recurrence करना है, stone का prevent करना है recurrence. So think of the hydrangea. और easy expulsion करना है stone का, तो think of the hydrangea mother tincture. Certain then we see that Pereira brava used for easy expulsion of stone. Vuavarsi, stones in the bladder, also prescribed for the cystitis. Osimum can especially for right renal calculi. यूरिन कंटेंट यूरिक एसिड. ऑसिमम कैन की फाइंडिंग में आपको मिल सकता है कि यूरिक एसिड प्रेजेंट है. एंड दिस पेशेंट हैविंग आल्सो गाउट की भी हिस्ट्री हो सकती है ऑसिमम कैन में. देन सर्टेन रेयर मदर टिंचर्स आल्सो प्रिस्क्राइब. आई हैव प्रिस्क्राइब ऑल ऑफ देम. दिस मदर टिंचर्स आर आल्सो prescribed by me for the patient. Cretiva Q inhibit the formation of urinary stones and it's also known as diuretics. आयुर्वेदा में क्रेटाइवा दिया गया है. आयुर्वेदा में दो फॉर्मेशन में आता है. इट्स अ गोक्षर आदि गुगुड़ू करके आता है, उनके फॉर्मेशन. आयुर्वेदिक फिजिशियंस आल्सो यूज द क्रेटाइवा क्यू. यू कैन आल्सो रीड द क्रेटाइवा फ्रॉम द बोरिक मेट्रामेडिका. इन दैट इंडियन ड्रग्स के बारे में आपको मिल सकता है क्रेटाइवा मदर टिंचर्स. Then Phyllanthus, it also known as stone breaker. Not only hydrangea is a stone breaker, but Phyllanthus is also stone breaker. Help to eliminate the calculi, inhibit the stone formation. Phyllanthus is also bestly prescribed for the nephrolithiasis. Urtica urine, it acts as a cleaning agent for the kidney. When the use after expulsion of stone prevent the recurrence. Urtica urine also used as a purpose of cleaning agent of the kidney. Then Vesicaria communis, smarting and burning sensation along the urethra and in the bladder with frequent desire to void urine. These are the commonest medicines. Now remedy specialties. अभी जितने भी medicines के बारे में बताए, हर एक रेमेडी का कुछ स्पेशलिटी जो आपको क्लिनिकल जब पेशेंट आता है क्लिनिकली डायग्नोज करना है, प्रिस्क्राइब करना है, तो थिंक ऑफ द ऑसिमम कैन. ऑसिमम कैन इट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर राइट रेनल colic. Then pain in the ureter, cramping pain in the kidney. Patient says बहुत cramps आ रहे, right sided stone है, ureter ऐसा बहुत ऐसा पेशेंट फेल करता है कि हाथ लगा के दिखा कि इतना पेन हो रहा है. So think of the osimum can. Formation of spike of crystalline uric acid. Uric acid also found in this osimum can patient. Cantharis, left sided कोली की पेन रहेगा और बहुत बर्निंग रहेगा पेशेंट को. Think of the cantharis also. Hydrangea acts on the ureter, left-sided, sharp pain in the loins, especially left-sided. Bloody urine रहेगा. Hematuria is present also in the hydrangea. Berberis vulgaris, you know that Berberis का action
It is a base remedy and head remedy for the stone expulsion. Pain radiating to thighs, loins on urinating hematuria. Berberis के patient को आप uric acid diathesis भी आप rule out कर सकते हो. Patient having also gout. Berberis vulgaris patient having nausea before the breakfast. You can also see that Berberis vulgaris. जब आप बोरिक मेट्रामेडिका में देखोगे तो Berberis is a head remedy for the nephrolithiasis. EPGA, it is a rare remedy. Renal calculi with dysuria. Dysuria है renal calculi, so think of the EPGA. Then tenesmus after micturition with mucopus, mucus pus, uric acid deposits, and pyelitis. This condition found in the EPGA. Then sixth remedy is that the hedyoma, pain along the ureter, left kidney, dragging pain from the kidney to the bladder. Dull burning pain present रहेगा. Okay. Lithium carb, as it is acts on the joint affinity भी रहेगी lithium carb की. So pain, nephrolithiasis with kidney and ureter, turbid urine with mucus. Lithium carb is the think of that. Patient आता है आपके पास rheumatism है, doctor साहब also stone is there. So think of the lithium carb. It is a basically we can prescribe for the nephrolithiasis patient. Then sarsaparilla. Sarsaparilla renal calculi at the conclusion of urination, pain from the right kidney downward and tenesmus of bladder. Bladder का tenesmus है. Milky urine है. Patient बोल रहा है डॉक्टर साहब मिल्क जैसी यूरिन हो रही है. Think of the sarsaparilla. It is a basically we can prescribe for the patient. Okay. Then Pereira brava, left-sided colic, pain going down to the thigh, inflammation of urethra is found in the Pereira brava. Okay. Stigmatum. Nephrolithiasis with nephrotic colic, left-sided vesical catheter is found in the stigmata. Tabacum, patient having the habits of tobacco, continuously consumption हो रहा है tobacco का, patient having deathly pallor, nausea, both है present. So think of the tabacum. Okay, violent pain along the left ureter. So you can also prescribe the tabacum. Calculi renalis, जैसे मैंने बोला कि renal calculi हो रहा है, lessen the tendency to accumulation. Recurrence stop करना है तो think of the calculi renalis. I usually prescribe the calculi renalis along with the constitutional drug. Patient को calculi renalis usually 30 potency में repeat करता हूँ every month. So patient को 3 months मैंने दिया है अभी तक और उसके बाद stone भी नहीं हुआ है. तो calculi renalis is best remedy. Similarly gallbladder stone है. Apart from that gallbladder stone के लिए भी ऐसा एक अपने पास prescription है. There is a calculi biliaris. So these are the remedies. So we can use for the recurrence. Then hypomia is a kidney disorder with pain in back, help passage stone from the kidney. These are the commonest medicine. Now some important tips for the our student and my colleagues. Some important tips, that is stone breaking remedy. Think of the hydrangea. Stone dissolve करने वाले remedy, Urtica urine and Calcarea carb. Calcarea carb is again it is antisoric and best medicine for the stone formation. Okay, stone dissolve करने के लिए Calcarea carb is the best medicine. Stone pushing remedy, that is cardamom. Cardamom, it is a liver tonic. Okay, so think of the cardamom. Now any doubt related to that tips, or I move towards the case reports directly? Yes. Sir, I hope a question and answer session will be keeping in the last, sir. Please Yes, continue, sir. Yes, sir. So there are various cases for my side, but I have generally evidence based cases है आपको दिखाना है कि medicines कैसे दिया है मैंने, जो अभी तक आपको दिया है उसके ऊपर से हम लेंगे. Okay. So case report 1, patient 25-year male come with a complaint of pain in right lumbar region since 7 days. So cutting pain is there during micturition, aggravation and emulsion by lying down. On past history, nothing, no any disease is seen in the patient, and family history also negative. Okay. So while physical general, patient appetite is normal, desire for spicy foods, aversion of sweets, thermally patient was chilly, thirst was reduced. So 1 liter per day. Hardly patient drinks the water.
The vowels are normal once per day. Micturition, micturition is a painful burning micturition 4 times per day. The sleep also disturbed because of complaint. ऑन माइंड स्पेसिफिकली माइंड में पेशेंट ने कुछ पेन में ही इतना था कि क्या ही देने, तो माइंड में उसका सिर्फ इरिटेबिलिटी उतना फोकस किया. ऑन एग्जामिनेशन, नो एनी स्कार मार्क्स डिस्कलरेशन इन सीन, palpation tenderness over the right lumbar region. On investigation, patient investigation report में right proximal ureteric calculi 8.2 mm and right renal calculi of 4 mm. These are the USG findings. Final diagnosis, right renal calculi, probable medicines according to the my perspective, and also I have told that कि कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. राइट रेनल कैल्कुलाई और कॉन्स्टिट्यूशनल की थोड़ा वे से जाना था, बट पेशेंट का माइंड इतना कैच नहीं हुआ था कि मैं उसको नक्स मतलब लाइक पूरा माइंड के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल रख दूं. बट आई प्रिफरली चूज दैट नक्सोमिका एंड बर्बेरिस tincture. So नक्सोमिका in higher potency, the patient is irritable, desires for highly spicy food, and pain in lumbar region, and patient having also high lifestyle. Patient belonging to the age of 25, and patient continuously is a student working day night watching. Tea is the intake of patients, so heavy lifestyle था. So I prescribe Naxomica 1 m start dose along with that berberich 10 drops in half cup water for 15 days. And patient को सिर्फ Naxomica 1 m का एक डोज देने के बाद आप reports देख सकते हो. These are the reports. So right kidney, this is the report in 25/4/2023. So patient having 8.2 mm calculi and right renal calculi, ureteric calculi and right renal calculi in 4 mm. These are the stones. After that you can see that patient ने USG, मैंने बोला था कि पेशेंट को 3 months बाद USG कर लेना, बट पेशेंट ने किया नहीं. But after that patient having the episodes of food poisoning, patient just rule out the USG, and you can see that the patient having no evidence of calculi or no evidence of calculi or hydronephrosis is seen. This is the classical case of नक्सोमिका. जनरली उसके बाद पेशेंट अभी तक स्टोन के लिए फिर से आया नहीं, and patient is also got the magical result for that. Okay, second case, that is patient 27-year male come with the complaint of pain in back since 10 days. I go to the directly report, dull pain, known case of renal calculi, USG abdomen and pelvis shows the approximately 5.5 mm right distal ureteric calculus just below the crossing the iliac vessels, causing back pressure changes in the form of mild hydroureto nephrosis, 3.5 mm right renal calculi. ये पेशेंट का रिपोर्ट है. Prescription, I have prescribed the right medicines, that is the right sided affinity, lycopodium 1 m SD stat. So you can see the before result and after result. These are 3.5 mm ये report था, 3.5 mm right renal calculi and 5.5 mm right ureteric calculi. You can see that these are the changes. No evidence of calculi is seen. The excessive bowel gases. These are the cases. So basically 2 cases I have selected for this PPT, but some patient come with the after the expulsion of stone, आके डायरेक्टली स्टोन्स भी दिखाए कि डॉक्टर साहब ये स्टोन गिर गए देख लो. तो जनरली मैंने पेशेंट्स के स्टोर करके रखा है मेरे पास, सो आई कैन ऑल्सो yes, this is the case number. The patient come with the stones. डॉक्टर साहब मेडिसिन देने के बाद ये रिजल्ट आया है. Okay, these are the magical tips for the students. The nephrolithiasis कैसे ट्रीट करना है, थ्रू क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन कैसे जाना चाहिए, एंड अवॉइड द सर्जरी. जो स्टोन होता है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा. बहुत सारे पेशेंट इज एंशियस, नर्वस. जब आप पेशेंट का एक्यूट चीज ठीक कर दोगे ना, तो पेशेंट विल बी हैप्पियर फॉर आवर साइड कि डॉक्टर साहब ने एक्यूटली मुझे ठीक कर दिया. स्टोन अभी मेरे पास इसके बाद जब से मैंने रेनल स्टोन ठीक करना चालू कर दिया, एवरी मंथ देयर इज अ 10 to 12 पेशेंट कम्स टू मी कि डॉक्टर साहब इतने इतने mm का स्टोन है. लास्टली आई हैव क्लियर द स्टोन ऑफ 11 mm. 11 mm का स्टोन ट्रीट किया है मैंने, और सर्टनली 2.5 mm स्टोन इज लेफ्ट.
उसके लिए भी ट्रीटमेंट चालू है उसका. So these are the basic tips for the nephrolithiasis. Okay, thank you. So you can ask also the questions for me, my side. Thank you, sir. Thank you so much for the in-depth section regarding the nephrolithiasis. Yes. So, any questions from the participants, they can put it in the chat box so that sir will be answering. Yeah. Any questions from the participants? They can put it in the comment box. Yeah. Sir, I hope the participants are very clear and they are directly saying in the comment box that no, clear, the session is very clear. Okay. So one more So there is question. a question, sir. How we approach miasmatically in this type of cases? Yes, basically nephrolithiasis, when we are seeing that miasmatic angle, so you can take the such medicines कि miasm कौन सा dominant है, तो patient having recurrent stone हो रहा है, recurrence हो रहा है, उसका diet regimen देखो, consider करो, family background, family history is more important. So miasmatically, most of the I found that antipsychotic medicine, antipsoric medicines are more profoundly seen, and usually we are prescribing on the basis of miasmatic angle. So miasmatic remedy will cure the recurrence also. So basically miasmatic के लिए आप जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो तो डोमिनेंट मायाजम जो रहेगा उसके बेसिस पे दीजिए, और जो भी मेडिसिन miasmatic एंटी miasmatic should be in higher potency also. Yes. Sir, there is a other question from the participant also, sir. But I hope this question is also not clear. Okay. If patient with history of dialysis. Okay. Yes, this is the I think question. I think the question is clear to you, sir. Yes, if patient with history of dialysis, then so dialysis है, but again it is a question कि dialysis में kidney is not working. So there are certain medications on the patient. So in that the site, size and stone कहाँ है उसके लोकेशन वाइज देखिए, और जब भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना रहेगा आपको डायलिसिस का, तो during treatment there is a creatinine level also should be taken, and dialysis history, so you can also use medicines in lower potencies, not higher potencies. Higher potencies can cause the aggravation also. Yes, clear. Yes, Nikhil Chalet. Yes. मतलब जब ये पेशेंट को जो नेफ्रोलिसिस होता है तो वी कैन आल्सो शुड concentrate on the creatinine level also, sir. No, yes, because moreover challenge is that कि जब भी पेशेंट आएगा अपने पास कि creatinine level also should be taken, but kidney is not working properly, and patient is on dialysis. So chances of homeopathic medicine usually we are prescribe for that. So जब मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक चीज ऐसा रहता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी जैसे मदर टिंचर्स आर यूजुअली मेड ऑफ अल्कोहल. Okay, this can also damage the kidney itself. So that's why during uh, uh, treating with nephrolithiasis, so creatinine level should also consider
while they're treating the disease. I usually dialysis का मेरे पास अभी तक पेशेंट नहीं आया है, but these are the tips my master says that कि आपको कोई भी मेडिसिन देना है, होम्योपैथिक मेडिसिन, डायलिसिस का पेशेंट है तो टेक दैट नोट कि क्रिएटिनिन लेवल चेक कीजिए, और यूजुअली थेरापेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते वक्त आप मदर टिंचर के बजाय आप दूसरे मेडिसिन लाइक dynamic doses 30 potency, 6 potency you can also use. Yes, sir. Any other questions from the participants? They can put it in the chat box. Yeah. Sir, I hope the topic is clear to them, sir, now. So we will wrap up the session now, sir. So thank you, sir. Thank you so much for the insightful session. So we have learned so many things regarding the nephrolithiasis, its types, how to management with the homeopathy medicines, and how to deal a case also, and regarding the miasmatic analysis also in the question by the participants, you have explained it in a very well manner. We'd be quite thankful to you, sir, for such enlightening session. And thank you all the participants for their active engagement to the session. So, we'll be coming more with the other sessions like this. So we hope we will be needing more such sessions, sir, from you also. Yes, yes sir. ma'am, definitely ma'am. I would like to thanks Dr. अर्पणा पारिक मैम, एंड आपको भी धन्यवाद कि आपने बहुत मतलब कोलकाता आए थे, हम बहुत सुना था आईसाय के बारे में. सो आईसाय ने जो अभी इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा है, और स्टूडेंट विल आल्सो गेट encouraged from these sessions. Okay, many more sessions should be conducted in this manner. And thanks to Dr. Arpana Parik ma'am and today's anchor Dr. Ashika Jain and Dr. Aditi Malkan. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. It's all the team effort, sir. Yes, sir. Thank you to all the team also, sir, from our side also. And Yes, thank ma'am. you all the participants. And tomorrow we'll be having one more session. So Sunday we are coming with something special for you from one legendary book writer. So stay tuned for the update. So we'll be having a session soon on 10th of this month in a very special session from our side, and Sunday special session we'll be having the details in the group very soon. Yeah. Thank you all. Thank you so much. Thank you.